औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ भी रखे अपनी अमान में रखे, अपनी सलामती में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। क्लास 7 की है इंग्लिश, 3rd एडिशन। और जो इसका आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है मून वाइंड। ठीक है, तो ये इसके जो है वो कुछ वर्ड्स हैं, उसके ये मीनिंग्स हैं। क्लाउड्स मीन हेड्स, फेरिस व्हील अ giant revolving vertical wheel as seen at fun fairs. Flounders mean struggles and plunks and in mud or while wading. Marque a large tent. Squall a sudden and violent gust of wind. Utter mean complete. इसकी हम पैराफ्रेजिंग भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज भी इसी करेंगे। बट आज की वीडियो में जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है वो डन करेंगे। और क्योंकि काफ़ी लेंथी है, आपको पता है कि इंग्लिश के जो चैप्टर्स होते हैं, जो एक्सरसाइजेज होती हैं, इनकी बहुत लेंथी होती हैं, तो वो एक पार्ट में होना मुश्किल है। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो हम बट ये जो है वो कर लेंगे कंप्लीट। आज हम एक्सरसाइज करते हैं, इसकी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ये मैं इसलिए इसको इतना क्लियर रख रही हूँ कि अगर किसी के पास बुक नहीं है, किसी स्टूडेंट के पास, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर किसी को जो है वो इस पोएम की जो है वो कंप्लीट फ्रेजिंग चाहिए और इसकी एक्सप्लेनेशंस चाहिए, इसकी ब्रीफिंग चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए वीडियो रेडी कर दूँगी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं जी। तो नंबर 1 इज़ अंडरस्टैंडिंग द पोएम। मीन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। A is how do things get blown about on the moon if there is no wind? So ऊपर आपने हेडिंग दे देनी है क्वेश्चन आंसर्स की। Answer is for the poet, things on the moon get blown about because of the utter stillness of the moon. Everything is weightless on the moon and it's airless. However, the poem is sheer fantasy, so anything can happen. B is complete question is when the moon wind begins to blow, some strange things happen. Make the unlikely things that take place on the moon. Please avoid पीछे से पैरट की आवाज़ें आ रही हैं, तो उसको ज़रा अवॉइड कर दीजिएगा। Answer is a squall of hens and cabbage knocks you off your feet. 2 is a tearing twisting sheet of pond clods you with a frog. 3rd is a camp of a carnivorous squash. 4th is a Ferris wheel bounds along the skyline. Okay, now question number C is which words does the poet use to describe the following or the movement make? In what way are the descriptive words appropriate? इन सब को जो है वो हमने डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले कैंडल मीन फ्लेम, जियांट मार्क, हेंस एंड कैबेजेस, पॉन्ड्स, कैरावन्स एंड फेरिस व्हील। सो नंबर 1 इज़ कैंडल फ्लेम। द कैंडल शिवर्स आउट। नॉर्मली वी वुड से फ्लिकर, बट शिवर इज़ जस्ट एज गुड एज अ वर्ड. इट्स यूज इन ऑज इन द शिवर्स इज़ नॉट एसोसिएट विद heat but with cold. Here if candle shivers out, we feel they could even more. B is giant mark. Booms and flounders like a swan. See, we have found booms and movement here. The image of a swan, large bird like the large mark. Floundering in the sea is apt. The swan is normally seen on a placid body of water (bracket close), but ungainly when not in its usual environment. 3rd is hens and cabbages. A squall knocks you off your feet. These are then flying haphazardly squall and at some speed. An image of akin to raining cats and dogs. One would know too well if one is hit by these flying objects. Number 4 is pond. Tearing twisting sheets clouds you with a frog. To the eye, a pond look like a sheet of water.
If this sheet were to suddenly fly towards you, it would needed be tearing and twisting and being clouded. A fog would certainly only be a surprise, but painful as well. Number 5 is a Ferris wheel bounds along skyline like a somersaulting giraffe. A Ferris wheel is a large and stands out against a skyline. So does a giraffe. A spinning giraffe with its hanging swings flying in all directions. 6 is caravans. Suddenly squawks and takes off. The caravans, presumably parked in a canvas park, are compared to flock of birds sitting in a field and then suddenly taking off. So it's all done here. Now we'll come to these questions are more difficult. Discuss them first. D is what is so strange about the idea in the last line of poem? Can you think other expression of this kind? और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं. डू यू लाइक द पोम? कैन यू से वाई यू लाइक और डिसलाइक इट? सो नंबर 1 आंसर इज डेड स्टिल मीन्स एब्सोल्युटली विदाउट मूवमेंट. 2 is blast means a strong gust of wind. There is a contrast here of opposites. It is rather like saying he is a meat-eating vegetarian. Can the pupils think of others contrasts that are absurd? The other question was, did you like the poem? Why? Yes, I like the poem because the poet is describing his imagine on moon, and the poet imagine things that are impossible and cannot happen on the moon. Next exercise is the rhyme scheme of the poem is A, B, C, D. Is this true throughout the poem? Yes, answer is yes. Number 3rd one is there one pair does not quite rhyme? Stanza number 5. And what is not rhyming of giraffe? Not a perfect rhyme. Okay, now come to another page, that is we have to do pronouns, and here are some smileys that you are familiar with. Can you complete them? So, as white as snow, as clear as glass, as sound as bell, as dark as pitch, as bright as sun, as soft as silk, as sharp as knife, as poor as dirt, as strong as ox, as quick as flesh, as smooth as silk, as straight as arrow. So, come down. There is another exercise. Definitions. Copy these terms into your exercise books and write the definitions for each. Astronaut, satellite, space shuttle, launch pad and rocket. So आइए define करते हैं. What is astronaut? A person trained to pilot, migrate or take part as a crew member in a spacecraft. B is satellite, an object bunched into round the earth, any orbiting body in space. C is space shuttle, a rousable spacecraft with wings for controlled ascent in the atmosphere. Launch pad, the base or platform from which a rock or spacecraft is launched. Rocket, a vehicle or device propelled by rocket engines. So today we have done a lot. Come to another page. In page number 28 we have another exercise, that is C, learning about language pronouns. So ये भी कर लेते हैं. What are pronouns? आपको जो है वो यहाँ पर बुक में अंडरलाइन करना होगा. ये आप देख लीजिएगा. मैंने यहाँ पर जितने भी प्रोनाउंस हैं इसमें मी, हिम, दे, मी, अस, ये सब प्रोनाउंस जो हैं वो मैंने इसमें अंडरलाइन करवा दिए हैं. आप जो है वो ये देख लीजिए, ये बुक में से भी आप देख सकते हैं. तो आज की एक्सरसाइज बल्कि यहाँ पर
यहीं पर मैं आज की एक्सरसाइज ख़त्म करूँगी, क्योंकि जो है वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पैराफ्रेजिंग करेंगे और रिमेनिंग बुक की जो भी एक्सरसाइज है वो डन करेंगे इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।